Listen carefully. Question is the students, एक light rod मैंने दिया है students. Okay, I'm giving you a light rod students of length 200 centimeter मैंने दिया हुआ है. Okay, and it's suspended from a ceiling horizontally. जिसको मैंने ceiling से horizontally suspend करके रखा हुआ है और ये rigid support है. ये ceiling है students. Okay, so a light rod of length 200 centimeters suspended from a ceiling horizontally by means of two vertical wires. These are the wires. Okay, two vertical wires we consider. Okay, of equal length. The length of the two wires are exactly the same. One end of the wire is made of steel. ये वाला steel से बना हुआ है. Okay, and its cross section area A1 is 1 centimeter square. And the other of brass. और इसका area of cross section मैंने दिया है students 0.2 centimeter square. Okay students. Along the rod at which distance? ध्यान से सुनना. Question है along the rod at which distance? Along the rod at which distance a weight be hung? यानी suppose अगर मैं यहाँ से कोई एक weight hung करता हूँ W, तो क्या distance से मैं hung करूँगा? यानी if I take the distance from steel as x, agreed? तो ये तो 200 centimeter है, तो कहने से this is 2 meter. तो ये वाला distance कितना होगा? 2 minus x. Students, क्या ये clear हुआ? हाँ students? Yes, sir. So now the question is, along the rod, at what distance a weight should be hung? At what distance a weight should be hung? Two cases are given to you. First case and second case. In the first case, there is equal stress in both the wires. Equal stress on both the wires. So equal stress on the first and equal stress on the second wire. And second case के अंदर equal strain. There is an equal strain in both the wires, first and second. Given to you, Young's modulus of brass and Young's modulus of steel is given to you, students. Young's modulus of brass is given to you as 10 into 10 to the power of 11. Agreed? 9 centimeters square inverse. And Young's modulus of steel is given to us 20 into 10 to the power of 11. 9 centimeters square inverse. Students, क्या ये question clear हुआ सबको? Students, is the question clear? स्टूडेंट्स हाँ या ना तो बोलो, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? एक सिंपल मैंने एक रॉड लिया है स्टूडेंट्स, रॉड लिया है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर मैंने लिया है. आई गेटिंग इट? एंड दैट पर्टिकुलर रॉड, लाइट रॉड, यानी ये रॉड लाइट है स्टूडेंट्स, यानी ये रॉड का मास हम नहीं ले रहे. कंसिडर इट्स अ लाइट रॉड का मतलब मासलेस रॉड, ये सोच के चलो. और इस रॉड को मैंने ऐसे दो वायर्स बांधे हुए, एक स्टील का बना हुआ और एक ब्रास का बना है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग. At what distance I can support a weight, okay, from any one end of the wire, okay, in order to have equal stress and equal strain. Area of cross section of steel is given to you, area of cross section of brass wire is given to you, Young's modulus of brass wire, Young's modulus of steel is given to you. You have to find out the distance x of steel, sorry, of weight W from steel end in both the cases, for equal stress and for equal strain. Anybody? This command clear, Janvi, Sumit, Mistri, Dhruv, Harsh, Hitanshu, Josh, Kushi, Kunj, Niharika, Om Shinde,
ऋषि, रुखसार, सन्निका, विभावरी, स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. कौन रुखसार फास्ट? Yes, so we are doing new chapter only. हम शुरू करेंगे SHM में शुरू करेंगे. So हम तो नए चैप्टर के लिए आया है ना? So हम फर्स्ट टाइम तो एंट्री मारा ना. So हम नॉटी बॉय इसके लेक्चर्स मिस कर रहा था ना? नहीं, आज तो पहले से है. So हम तो अभी एंट्री मारा, लेकिन ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ज्यादा अटेंड नहीं किया ना तूने? So हम इसका आंसर दे. सोम कमन फास्ट, मुझे आंसर दे फास्ट. तूने आंसर अगर इसका करेक्ट आंसर दिया तो हम लोग शुरू कर देंगे. कोविड हुआ था? Oh my God, students, please. Soham had got a COVID in that case. This is very bad. Take care, my dear. ध्यान रखो अपना, students, please. Yes, anybody? क्या बात है सुबह. Smart. Who just got the answer? कुछ 1.33 ना? 0.33 कहाँ से आया? Sir, how come 5? हाँ कुछ 0.33 कहाँ से आया? या तो आंसर 1.3 आएगा, 0.7 आएगा. कुछ रीचेक. रुखसार, even you also recheck. Shall I do it for you all, students? सोम करूं मैं? हाँ सोम सॉल्व कर दूं? सोम का आंसर आ रहा है नसीब. वेरी गुड. सोम बता कैसा आया? सोम, कैन यू टेल मी हाउ डिड यू गेट इट? यस सोम, कैन यू आंसर? गुड. द आंसर इज क्लोज बाय. Students, listen carefully. The answer is going to students. What's the formula for Young's modulus? Young's modulus y is equal to f by a into l by e. ये तुम्हारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे दोनों में. प्लीज
Students, is the audio and video fine with all of you all? Yes, sir. Yes, sir. अभी पहले केस में इक्वल स्ट्रेस लेना है स्टूडेंट्स. इक्वल स्ट्रेस यानी तुम क्या करोगे, F by A को इक्वेट करोगे. तो व्हाट इज F by A? Sir, F by A for steel wire will be equal to F by A for which wire? Brass wire. F by A का मतलब क्या होगा सर? YEL for steel is equal to YEL for brass. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Agreed. Now, if in case if I happen to go for the ratio in this case, okay, the ratio of these cases we consider is your force acting per unit area. Can I get the ratio of the forces? ध्यान से देखो, diagram देखो students. ये तुम्हारा rod है. Please students, पहले केस में, okay, this is case 1. Please students, ये तुम्हारा rod था. यहाँ से तुमने weight को suspend किया. ये distance x है. ये distance 2 minus x है. What is the force acting in the two wires? One of steel and the other one is brass. Students, what is the force acting? Sir, ये है तुम्हारा tension T1 होगा. यहाँ पे tension T2 है. तो can I say tension T1 plus T2 will be equal to the W, that's the balancing forces. Upward forces are balanced by downward force. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. T1 and T2 का मतलब can I say force exerted in the string F1 plus force exerted in the string W is equal to W. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Now listen carefully students. अगर मैं ratio of forces लेता हूँ students, what is F1 by F2? यहाँ पे देखो, what is F1 by F2 क्या हो जाएगा? बताओ. तो can I say it will be A1 by A2. A1 by A2 हो जाएगा. Do I know the area of cross section? हाँ sir, 1 and 0.2. Agreed. It is 1 centimeter square. Agreed. Cross section is, sorry, ये 0.1 है, not 1. 0.1 students, 0.1 centimeter square तभी जाके 0.1 centimeter square students, not 1. Huh? And this is 0.2. तो can I say my ratio is 1 by 2? हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी देखो F1 by F2, तो can I say F1 by F2 is equal to 1 by 2. So what is F2 to F1? क्या मैं F2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, can I substitute F2 over here as 2F1? Yes, sir. तो देखो F1 plus 2F1 is equal to W. So students, can I say F1 will be equal to W by 3? Agreed? Yes, sir. And what exactly we consider is your F2 कितना होगा? What exactly F2 I'll consider will be equal to 2F1. So can I say 2W by 3? क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Now ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. Now I want the entire system to be in equilibrium. यानी देखो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा रॉड है, वेट यहाँ पे डाला हुआ है, तुम्हें एक फोर्स मिला है. क्या मिला है? उस फोर्स को मैंने दे दिया है F1. T1 के जगह पे मैंने F1 लिखा है, और यहाँ पे जो T2 लिखा है उसके जगह पे मैंने F2 लिखा है. तो स्टूडेंट्स, कैन आई से ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा. स्टूडेंट्स, व्हाट इज वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इसको हम क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इट टॉर्क? ये भी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर मुझे W चाहिए स्टूडेंट्स अबाउट दिस, तो कैन आई से द algebraic sum? The algebraic sum of total moment of force about this particular point O should be equal to 0. And students, F1 into X is equal to F2 into 2 minus X. क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. पूछा क्या है? पूछा क्या उन्होंने? पूछा ये है कि अगर मैंने इक्वल स्ट्रेस ले लिया तो ये वेट मुझे कहाँ पे सस्पेंड करना पड़ेगा, एट व्हाट डिस्टेंस? तो इक्वल स्ट्रेस का मतलब क्या? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द स्क्वायर शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस. तो मैंने F1 से इक्वल कर दिया, F1 x1 is equal to F2 x2. F1 by F2 का फॉर्मूला ये, F1 कितना आ रहा है देखो, W by 2. आई एम गेटिंग इट. इज दैट क्लियर? तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है W by 3 into x. F2 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 2W by 3 into 2 minus x. Can I say W and W will get cancelled? Can I get the value of x? 3 and 3 also gets cancelled.
Students, are you getting it? Yes, sir. तो क्या आ रहा है तुम्हें? X is equal to what? 4 minus 2x. 1. 1 कहाँ से आ रहा है? X is equal to 4 minus 2x आ रहा है. तो कहने से 3x is equal to 4. What is x? 1.33. Students, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी क्वेश्चन क्या पूछा था स्टूडेंट्स? प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे एमसीक्यूज में. द क्वेश्चन वाज स्टूडेंट्स, एक मासलेस रॉड दिया हुआ है एंड इज टाइड बाय 2 स्ट्रिंग्स, एक स्टील और एक ब्रास दिया हुआ है. उन्होंने पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मीटर्स. उन्होंने पूछा है कि हम डब्ल्यू वेट कहाँ पे सस्पेंड करेंगे सो दैट मुझे इक्वल स्ट्रेस मिल सकता है, मुझे इक्वल स्ट्रेन मिल सकता है. तो पहले हम इक्वल स्ट्रेस पे गए. फॉर्मूला ये लिया मैंने. इक्वल स्ट्रेस का मतलब एफ बाय दोनों केस में सेम होना चाहिए. तो वाई ये L1 वाई, तो ये भी तुम ले सकते हो. लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा इलोंगेशन से दिया ही नहीं है स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन मैं चेंज भी कर सकता हूँ. मैं इसको इलोंगेशन में भी दे सकता हूँ. कितना इलोंगेशन आता है करके गो द केसेस एंड देन गोइंग फॉर अ सर्टेन रिलेशन यू कैन गेट योर आंसर. लेकिन अभी हम इस पार्ट को नहीं लेते, हम इसको ही ले रहे हैं. What is the ratio of the forces? Ratio of the area. क्या एरिया दिया है? हाँ सर ये 0.1 है, 0.2 तो 1/2 आ गया. तो I'm getting the ratio of the forces. अभी देखो टोटल फोर्स ऊपर कितने जा रहे हैं? 2 फोर्सेस जा रहा है. T1 T2 दैट इज F1 F2 ऊपर की तरफ जा रहा है, W नीचे की तरफ जा रहा है. और पूरा रॉड बैलेंस्ड है, हॉरिजॉन्टली है. रॉड ना ही ऐसे हो रहा है ना ऐसे हो रहा है. प्लीज स्टूडेंट्स, द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम. Not even the rod is going in anti-clockwise or clockwise. Not even it's going to go in clockwise direction. Not even it's going in anti-clockwise direction. Not even in clockwise direction. वो horizontal है. यानी summation of all the moment of force about the turning point is equal to 0. तो F1 x is equal to F2 ये. F1 और F2 के बीच में रिलेशन मालूम है तुम्हें? हमने F1 F2 दोनों निकाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू ऑफ x आ गया 1.33. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ देम? हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. It's only Ruxar is responding. What about the rest of them? What about you, Kunj? हाँ सेकंड वाला कुंज ने सेकंड वाला आंसर दे दिया. हाँ कुंज तो पहले क्यों नहीं मिला कुंज? हाँ कुंज, why didn't you get the first time properly? Now please everybody get me the answer for equal strain. Ruxar, are you there Ruxar? Yes, sir. मुझे इसका आंसर लाके देखो प्लीज. एवरीबडी कॉपी दिस वन. इक्वल स्ट्रेस का लिखो इक्वल स्ट्रेन. इक्वल स्ट्रेन में रुखसार क्या करोगे तुम? E by L को कांस्टेंट रखना. E upon L is equal to E by L for the next one. और E by L को कैसे लिखोगे तुम? फोर्स में लिखना. हेलो रुखसार, फोर्स में लिखना क्योंकि तुम्हें फोर्स दिया है, EL नहीं दिया है. एग्रीड? ट्राई टू गो फॉर Yes, दिस sir. एंड गेट मी द आंसर. Students, all of you will solve for the next part. Equal strain. Kun just got the answer. Okay, cool. Students, area of cross section, the first one is 0.1 centimeter square and second one is 0.2 centimeter square. Please students, to correct it out.
Yes, anybody? Who just got the answer? Anybody else, students? For equal strain. Look, sir, are you getting it? Sir, doing. I'm erasing this part, students, please. Sir, 1. Very good. Very good. कैसा है बताओ? How did you get it? बोलो. Sir, E1 upon L1 is equal to E2 upon L2. Yes, wait a minute. E by L. Students, E by L का फॉर्मूला क्या होगा? E by L का फॉर्मूला F upon A by I. देखो ये वाला फॉर्मूला लिया. तो इक्वल स्ट्रेन्स का मतलब स्टूडेंट सेकंड केस में इक्वल स्ट्रेन्स, उसका मतलब व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि स्ट्रेन इन स्टील वायर इज इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास वायर. लेकिन तुम्हें ना ही इलोंगेशन दिया है दोनों केस में, ओरिजिनल लेंथ तो सेम है, इलोंगेशन तो दिया नहीं है. तो तुम इलोंगेशन को किस हिसाब से लोगे? यानी तुम फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ द फर्स्ट वन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन यंग्स मॉडुलस, यानी तुम इस फॉर्म में लिखोगे. लोग सर ऐसे ही लिखा ना तुमने? Yes, sir. हाँ, अब इसके बाद में क्या करोगे? Sir, then F1 upon F2 is equal to Y1 upon 2Y. F1 by F2 will be equal to what? ये यहाँ पे चला जाएगा तो A1 Y1 अपॉन A2 by 2. अभी देखो रेशियो ऑफ द एरियाज दिया, हाँ सर एरिया दिया इसका 0.1, इसका एरिया कितना दिया है 0.2. इसका यंग्स मॉडुलस कैसे दिया है? पहला वाला कौन सा? स्टील है, ये स्टील पहला वाला स्टूडेंट्स, ब्रास दूसरा वाला. स्टील कितना दिया है? 20 इंटू 10⁻11. भले वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, डजंट मैटर, रेशियो है ना स्टूडेंट्स. नीचे वाला देखो इसका कितना है? 10 इंटू 10⁻11, वो भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या करोगे तुम बोलोगे सर ये तो डेसिमल तो चला जाएगा, ये भी 20 ये भी 20, तो सर पूरा कैंसिल होकर मेरा रेशियो क्या होगा? 1:1. we can I say the two forces F1 by F2 is 1:1. therefore can I say F1 is equal to F2? Sir, did you get this part? Yes, sir. अभी डायग्राम देखो, फॉर फ्री बॉडी डायग्राम बना अभी इसका. ये तुम्हारे दोनों रोप्स है, ये 1 जो स्टील था, ये 2 जो ब्रास था. यहाँ पे हमने क्या लिया था? टेंशन T1 एंड T2. टेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स F1 एंड F2 जो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है. नीचे जो लोड है उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है. ये डिस्टेंस x लूंगा, ये होगा 2 - x. ओके, नाउ हाउ डू यू गो अबाउट? Sir, then T1 plus T2 is equal to weight. Absolutely correct. The two forces acting in the upper direction is T1 by T2, that is equal to the weight of the body. So T1 or T2 is equal to F1 and F2. Yes, sir. So F1 plus F2 is equal to W. लेकिन is F1 equal to F2? Yes. तो यहाँ पे मैं दो possibility है, तो 2F1 is equal to W या 2F2 is equal to W. So students, what is F1? Half of this, और F2 कितना होगा? W by 2. दोनों केस में मुझे F1 और F2 की वैल्यू मिल गई है. अभी तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ, कैसे करोगे अभी? Sir, then F1x is equal to F2 in bracket 2 minus x. ये कहाँ से तुमने आंसर निकाला? ये कहाँ से फॉर्मूला निकाला? क्यों निकाला? क्यों यूज किया? रीजन क्या? तो क्या बोलोगे? सर आपको बीम, आपको जो रॉड है, जो मासलेस है, उसको हॉरिजॉन्टल रखना है. यस कुंज, ये जो रॉड है उसको हॉरिजॉन्टल रखना है. ना ही स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, ये रॉड को देखो, इससे मैच करो डायग्राम. ये रॉड ना ही तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, नॉट इवन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी ना ही वो इस तरफ जा रहा है, ना ही वो इस तरफ जा रहा है. उसका मतलब अगर मैं ये टर्निंग पॉइंट लेता हूं मेरा, और ये मैं एक्सिस लेता हूं ये, तो मैं algebraic sum of total moment of force about point O should be 0. तो उसका मतलब torque in anti-clockwise direction should be balanced by torque in clockwise direction. क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. रोटेशनल डायनामिक्स का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स.
टॉर्क का मतलब क्या हुआ, वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन फोर्स यानी ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये हुआ एक्सिस है, तो कहने से ये होगा F1x, दूसरा क्या होगा F2 इंटू और 2 माइनस एक्स। F1 और F2 है क्या सर, W/2, ये भी क्या है W/2, 2 minus x, यानी कि W gets cancelled, 2 also gets cancelled, so what is x is equal to 2 minus x, agreed, so can I say 2x is equal to, so what's the distance, 1 meter, क्या ये clear हुआ? Yes, sir. That means the load W is suspended at a distance of 1 meter from which wire, steel wire or brass wire, steel wire, तो brass wire से कितनी दूरी पे होगा 1 meter, यानी ये मिड पॉइंट पे होगा। वही जब हमने इक्वल स्ट्रेस लिया था, then your distance was 1.33 from steel wire, 0.7 from brass wire, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. दूसरी बात, ये जो रॉड था वो मासलेस है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने इस रॉड का तो वेट भी नहीं लिया। अगर बाय चांस सपोज, ध्यान से सुनना भी स्टूडेंट्स, अगर मैं ये प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं और फिर मैंने बोला कि द रॉड हैज अ मास ऑफ 10 grams, students, rod has a mass of 10 grams, so what is the entire mass of the rod is concentrated at geometrical center, तो स्टूडेंट्स ये जो 10 ग्राम्स यहाँ पे होता और उसका डिस्टेंस यहाँ से तुम लेते, फिर इसको तुम x लेते, इसको तुम अनदर डिस्टेंस लेते, ये पूरा तुम्हारा होता, एंड देन यू कैन, यानी ये टोटल टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टोटल टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज, वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से भी तुम जा सकते थे। So those are different kind of questions. Is this clear to all of you all? Yes, sir. Students, hope all the students in this particular meeting are able to get it. Sumit, are you getting it, Sumit? Sumit? Hitanshu, Josh, reply fast. Sumit, Hitanshu, Josh, because I'll ask only for those students, those who respond at times. And if they also, because Kunj is responding right now, and it's only Om Shinde. What about Om Shinde? What about you? Rishi, what about you? समझ में आ रहा है ऋषि? Yes, sir. Okay, Om has also responded. Fine. Can I erase the students? इसको erase कर दूं मैं अभी? Yes, sir. Okay, students. Now let's go for your simple harmonic motion, students. SHM. Okay. Now, students, this is a very good chapter. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे mathematical relations भी आएंगे, students. And very important, students, you have to be good in your trigonometry. ट्रिको के concept बहुत सारे use होने वाले हैं for this particular topic we consider. Okay, when I speak about simple harmonic motion, students, the word itself gives you the meaning harmony. In synchronization we consider. In synchronization. ये एक part है which actually helps you to understand your wave mechanics and the propagation of wave. Okay, matter waves के बारे में हम बात करते हैं, that is we speak about longitudinal waves we consider. Okay, now यहाँ पे हम simple harmonic wave के अंदर हम ले सकते हैं दोनों case, transverse भी ले सकते हैं, longitudinal भी ले सकते हैं. So if I want to understand simple harmonic wave, सबसे पहले we need to understand important concept of what is oscillatory motion and what is periodic motion, students. कोई मुझे बता सकता है oscillatory motion का मतलब क्या है और periodic motion का मतलब क्या है?
So do you know what exactly oscillator motion? What exactly? And give me examples of each. Anyone? Now, students, oscillating motion and periodic motion. Can you give me an example of each? So क्या बोलोगे? Anybody of you all? Home India put forward. Okay. Wait a minute. Let me read it. 2 students have answered. He has only answered. Fixed time interval, pendulum. Okay, fine. Students, he has given an example of a pendulum. Of course, oscillating motion ka matlab, students, it's a to and from motion of an object about its mean position. Okay, Ruxar, okay, pendulum. Students, it's a to and from motion of a body about its mean position and retraces its path in a fixed interval of time. It's called oscillatory or vibration motion, students. यानी ये क्या मालूम है? To and fro, या back and forth. Okay, to and from motion. कहाँ पे? About its mean position. है ना? And retraces its path in a fixed interval of time. Such motions are called to be oscillatory motion. अभी suppose इसने example दिया oscillatory motion का, तो examples क्या होगा? Motion of a bob, of a simple pendulum. Why not? It's an oscillating motion we consider. यानी अगर मैं bob लेता हूँ pendulum का, तो देखो ये bob simple pendulum है, ये तुम्हारा extreme position में ले लेता हूँ, ये दूसरा extreme position में ले लेता हूँ. Agreed? तो if in case अगर इसको मैंने mean position दे दिया students, mean position तो x is equal to 0 लिया, ये तुम्हारा positive extreme, तो x is equal to मैं प्लस ले लूंगा, ये तुम्हारा नेगेटिव एक्सट्रीम यानी x is equal to माइनस है स्टूडेंट्स लूंगा. तो ना अगर मैं इसको मोशन को डिस्क्राइब करूंगा तो कैसे होगा? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ स्टूडेंट्स. इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? The motion is going in this direction, coming back, going in the backward direction, again coming backwards in this direction. Students, can I say this is actually to and fro? Students, is it clear? So is it clear? Yes, sir. Motion back and forth motion we consider. देखो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ कहाँ पे? अबाउट इट्स मेन पोजीशन के अबाउट हो रहा है. आई गेटिंग इट? और ये जो मोशन है वो टेक्स प्लेस इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. एक फिक्स्ड टाइम होता है, यानी अगर तुम घड़ी को यहाँ से शुरू करोगे तो टाइम टेकन फॉर इट टू मूव टू एंड फ्रो एंड कम बैक रिमेंस द सेम. तो अगर सपोज किसी ने पूछा, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये जो मेन पोजीशन है ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस में, तो स्टूडेंट्स ये कितना हुआ? ये हुआ तुम्हारा एम्पलीट्यूड. Please students try to understand this. This is amplitude. Maximum displacement of particle from its main position is called as amplitude. तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हुआ, ये भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड हुआ स्टूडेंट्स. हेलो, ये भी एम्पलीट्यूड हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये भी एम्पलीट्यूड हुआ. अगर सपोज मैंने पूछा स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड ऑफ बॉब. कैन एनीबॉडी गिव आंसर फॉर दिस? Total distance by total time taken. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? ना सपोज अगर मैं ऑप्शंस देता हूँ, ऑप्शन है a ओमेगा बाय पाई, ऑप्शन बी 2a ओमेगा बाय पाई, ऑप्शन सी a ओमेगा बाय 2 पाई, ऑप्शन डी ओमेगा बाय पाई. कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स? Sir, a omega by pi. a ओमेगा बाय पाई. Are you sure?
Anjash? Yes, sir. Okay. Average speed of the bomb, what exactly consider total distance? Total distance कितना होगा students? जाने का A, आने का A, तो 2A and 2A तो कितने से total distance is 4A. Okay, yes, sir. Sir, तो फिर B होगा, yeah. Students, total distance is 4A. What is the total time taken? T. Periodic. What exactly T is equal to? Students, T is equal to what? 2 pi by omega. है ना? Students, what is time period? Yes, sir. 2 pi by omega. या T is equal to सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ. हाँ स्टूडेंट्स, ओमेगा को कैसे लिखते हो स्टूडेंट्स? मुझे बताओ. व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कैसे लिखते हो तुम इसको? 2 pi by T. हाँ 2 पाई बाई टी लिखते हो कि नहीं लिखते हो? टी की जगह पे क्या लिखोगे? 2 पाई बाई ओमेगा लिखोगे नहीं लिखोगे? तो 4 अपॉन व्हाट? 2 पाई बाई ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा? कैंसिलेशन में क्या आया देखो? व्हाट्स आंसर? 2a omega by sir 2a omega by pi. Which option is that? स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके तो ये कौन सा मोशन है तुम्हारा? ये है तुम्हारा ऑसिलेटिव मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट and retraces its path in a fixed interval of time we consider as called as oscillator vibration motion. तो तुम्हारे यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है? तो अगर किसी ने पूछा सर एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा? 2a ओमेगा बाय पाई, दैट मेनी मीटर पर सेकंड, बस ओमेगा इज 2 पाई बाय t. ये तुम्हारा एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स ऑसिलेटिव मोशन का. ओके, can you give me some other example of oscillating motion? The atoms and molecules which are vibrating about the mean position. What kind of motion is that? Oscillatory. Students, atoms. Example, atoms vibrating about mean position. What kind of motion is this called? Oscillatory. और ये क्या लिखा है सर? Atoms vibrating about their mean position. okay In yes. solids, if I consider how in solids, how exactly atoms are closely and compactly placed. So mean position, how they are vibrating, they are oscillating about the mean position. That's oscillating motion we consider. Vibration atoms we consider about the mean position. If I happen to go for prongs of a tuning fork, if I take a tuning fork, तो यहाँ पे जो prongs है, क्या इसको बोलते हैं? These are prongs. They vibrate about their mean position. That's also oscillating motion we can consider. Since if in case if I happen to go for a spring, and if I connect a load to it, ये है load. Students, load को अगर मैंने drag किया नीचे की तरफ और फिर मैंने release कर दिया तो देखो load भी to and from motion होगा. ये भी तो oscillating motion हुआ. या सपोज मैंने कोई एक टेस्ट ट्यूब लिया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर मैंने कुछ स्टील ऑब्जेक्ट्स है, स्टील बॉल्स रखे. सर आपने जो पीरियोडिक मोशन लिखा है वो मतलब ऑसिलेटरी मोशन इक्वल पीरियोडिक मोशन ही है ना? Yes. Oscillating motion or periodic motion, the same we consider. Okay, yes, they're just synonyms. Yeah. Yes. लेकिन there is a difference. दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा हूं मैं. दोनों के बीच में डिफरेंस है, which I am going to tell you about it. Friends, Yes, sir. देखो prongs of a tuning fork vibrating, a load when suspended by a spring. Suppose अगर मैं टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने स्टील ऑब्जेक्ट्स दिए, स्टील बॉल्स दिए, और फिर सपोज उसको मैंने कोई सोल्यूशन में रखा स्टूडेंट्स, and then if I tap it downwards, will the tube will move up and down? Students, will that be an oscillating motion or not? So can you repeat the spring part? Spring or tube, which one you want? Sir, the one you were just explaining that. I was speaking about a tube. Yes. Students, take this tube and put some steel objects, steel balls inside it of small radius. थोड़ा सा उसको भर दो और फिर वो ट्यूब को तुम डाल दो पानी के अंदर और फिर उसको टैप करो नीचे की तरफ और फिर रिलीज करो, तो क्या होगा? The tube will oscillate about its mean position to and fro.
What kind of motion will going to have? Oscillatory motion. अगर सपोज मैंने कंपास नीडल लिया स्टूडेंट्स, तुम ध्यान से सुनना, a compass needle always face in what direction? It shows geographical north and geographical south. हाँ कि ना? अगर इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया from its mean, from its equilibrium position, अगर मैंने इसको इस तरफ ले लिया फिर मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा? ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? इट विल ऑसिलेट, है ना? एंड देन इट विल कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन. तो कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा, कुछ टाइम के बाद में कहना इसे इट्स गोइंग टू कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन. ये भी ऑसिलेटरी मोशन है स्टूडेंट्स, ये भी ऑसिलेटरी है, ये भी ऑसिलेटरी है. Atoms vibrating about the mean position, that is also oscillatory. Prongs of a tuning fork vibrating about the mean position, that is also oscillatory. We consider a swing, moving, a swinging, a needle of a swing machine. Swing machine देखा ना, मम्मा यूज करती है swing machine, तो उसका नीडल ऊपर नीचे जाता है, नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन कंसिडर. ये सारा ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर है. और एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स. सपोज अगर मैंने आंसर सुनो स्टूडेंट्स, अगर मैंने कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया, ओके, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ओके, और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मैंने इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया है, कहाँ पे? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर सपोज मैंने ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को सपोज तुमने राइट हैंड साइड पे लिया तो होगा क्या? स्टूडेंट्स, इफ आई टेक दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, टेक इट टू द राइट हैंड साइड, क्या होगा बताओ? Soham, tell me. It will try to move towards left side. अरे नहीं यार, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेगा तो अट्रैक्ट होगा ना रुखसार. हाँ रुखसार, कहाँ से लेफ्ट में जाएगा? जाएगा ही नहीं. अगर मैंने इस तरफ लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो उस तरफ ही जाएगा, इस तरफ आएगा ही नहीं. लेकिन अगर सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसा फ्लिक किया परपेंडिकुलरली, ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने या तो ऊपर भेजा या नीचे भेजा तो क्या होगा रुखसार, सोहम, कुंज, ऋषि, ओम, जल्दी. Sir, will the protons get attracted along the hypotenuse? Pardon? Sir, the protons will get attracted to the electron. Proton will get attracted to it. My dear, this is positive charge will create a force. Electric field. Electric field is the electric lines of forces we are moving from positive to negative. ये जो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, वैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा. स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे दिया ना अलोंग y एक्सिस, तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करना शुरू करेगा, ना ही लेफ्ट में जाएगा ना ही राइट में जाएगा. सी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इसके भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ जाएंगे, इसके भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ जाएंगे, इसके भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ जाएंगे. Equal in magnitude, opposite in direction. They'll cancel each other. What happens to the electron? The electron will oscillate about its own position. No, my dear, stable नहीं होगा. ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होगा. ध्यान से सुना. It will undergo motion. Okay. Then due to gravity again it will fall down. It will tend to maintain its motion due to inertia. Again it will be pulled back by the forces exerted by the positive charge. So what kind of this motion? The electron will perform oscillation. Such an oscillating electron, students, such an oscillating electron results in alternating current. ये जो AC है ना, तुमने पढ़ा होगा, तुमने सुना होगा, ना पढ़ा होगा, DC AC. हाँ स्टूडेंट्स, DC का मतलब क्या, AC का मतलब क्या? आगे जाके पढ़ो तो तुम्हें DC का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट किसकी वजह से होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटिंग. दैट लीड्स टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट वी कंसीडर. तो कैन यू मेक एन इलेक्ट्रॉन टू ऑसिलेट? व्हाई नॉट? मैं ना ही राइट में भेज रहा हूँ ना ही लेफ्ट में भेज रहा हूँ, मैंने वर्टिकल ले लिया है तो वो ऑसिलेटिंग होगा. ये सारे एग्जांपल्स किसके वाले? ऑसिलेटरी वर्ड. ये सारे ऑसिलेटिंग मोशंस की है. अगर यहाँ पे टाइम पीरियड कांस्टेंट हुआ, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे टाइम पीरियड कांस्टेंट हुआ तो वो हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, कैन ऑसिलेटरी मोशन बी पीरियोडिक? ट्रू और फॉल्स?
True. 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 Oscillatory motions are periodic. लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूं क्या periodic motions are oscillatory? So not always. Not necessarily. Not necessarily. ये ध्यान में रखना. अभी एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल जहां पे तुम है मोशन पीरियोडिक लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, तो तुरंत तुम्हारे आंसर होगा सर अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना? रोटेशन डायनामिक्स किया कि नहीं किया? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये अर्थ है तुम्हारा. सोहम, समझ में आ रहा है राइटिंग्स? हाँ सोहम, तो देखो अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट टेक्स हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स, 86,400 seconds. Is time period remaining constant? Yes. Is the motion periodic? Yes. But is it oscillatory? No. क्यों? Because it's not oscillating between two finite positions. So समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. For example, if I consider Earth revolving around the sun, performing uniform circular motion, is it periodic? Yes, it's periodic. But is it oscillatory? No, it's not oscillatory. Why? Because the Earth is not oscillating between two extremes. ये oscillate हो रहा है between two extremes along y-axis. Linear. ये oscillate हो रहा है लेकिन ये होगा angular. ये oscillate हो रहा है along x-axis. Linear. ये oscillate हो रहा है along y-axis. Linear. ये भी oscillate हो रहा है along x-axis. ये सारे linear oscillation we consider. It can be either along x or along y or along z. One dimensional motion we consider. But oscillating to and fro. यहाँ पे periodic motion के अंदर क्या होगा? Earth revolving around the sun. Yeah, the comets we consider, which we see after every 76 years, the Halley's comet, or the moon, which revolves around the Earth. Can I say the motion is periodic? You know, but not oscillatory. So are periodic motions oscillatory? Not necessarily. लेकिन are oscillatory motions always periodic? Yes. ये ध्यान में रखना. Students, क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Can I erase this much? No, sir. Okay, please. If you're writing it, write on correctly. कहाँ पे भी कुछ भी अगर writing समझ में नहीं आता तो please ask me. Okay, unmute yourself and ask. Don't write on incorrect information. Shall I erase now, students? No, no, sir. 1 minute. Sir, so for periodic motion, can we write that it is basically oscillatory motion but not within 2 points?
It is oscillating, but not two fixed points. no, say it once again. What you said? Sir, for periodic motion, can we write the definition as it is oscillatory motion but not within two fixed points? No, my dear. You should just say a motion which repeats itself in a regular interval of time, or a phenomena which repeats itself in a regular interval of time. It's called periodic. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. For example, the way you are having your lectures. Now, see, if you look over here, my sessions are always on which days? Always on Mondays. Yes, You sir. know, 6:15 to 8:15. So that's a periodic. You know, a phenomena which repeats itself in a regular interval of time. इसके lectures तुम्हें consistency में यानी periodic होता है. इस टाइम पे Yes. इनका ही लेक्चर होगा करके blindly you can say कि हाँ उनका तो उसी दिन होता है उसी टाइम पे होगा. That's a phenomenon. Can I erase now, students? No, sir. Sir, just 1 minute more. Okay, fine. Sir, what have you written below that atoms vibrating about their mean position that Said from? it, motion of prongs, Prongs, prongs of a tuning fork. Prongs of a tuning fork vibrating about the mean position. This is a spring oscillator. You can give an example of a spring oscillator, a load connected to a spring. It moves to and fro. A tube containing steel balls immersed into a liquid of density rho. The tube floats. And when you apply force onto it and release a force, the tube starts oscillating within the liquid of density rho. This is all vertical SHM. There are horizontal, vertical. This is angular. Needle, compass needle oscillating about its mean position. Yes, Kunj, A is the amplitude. Kunj, A is the amplitude. This is plus A, minus A. And A stands for amplitude.
maximum displacement from its mean position on either side. Can I erase now? Yes, sir. Okay, students. So I told you that simple harmonic motion we consider is normally considered as periodic motion, but it's actually considered about its mean position we consider, or about its equilibrium position. Now, how do you define your actual definition of SHM? Students, up till now I gave you definition of oscillatory motion and periodic motion. और ये मैंने बताया कि oscillatory motion हमेशा periodic होता है, लेकिन periodic motion जरूरी नहीं कि oscillatory होना जरूरी है. एग्जाम्पल सारे ऑसिलेटरी मोशंस के दिए, एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन के भी दिए, लेकिन अब ये एसएचएम का डेफिनेशन क्या है? एसएचएम को तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे स्टूडेंट्स? तो टू अंडरस्टैंड एसएचएम, लेट अस गो फॉर अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ अप्रोच एंड देन वी लैंड अप टू अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर इट स्टूडेंट्स. नाउ फॉर एग्जांपल, हम एसएचएम को समझने के लिए स्टूडेंट्स आई ट्राई टू गो फॉर अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेटर स्टूडेंट्स. जो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग वाला बताया था ना, वर्टिकल, वही हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं स्टूडेंट्स. नाउ प्लीज पेयर अटेंशन स्टूडेंट्स, ये सोचो कि यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है. Okay, this is a rigid support students. Okay, and think this is a surface onto which the block is placed. This is a second position in this. I'll consider block to be placed, and this is a third position I'll consider for the rigid support, and the block is in placed. Now, if in case if I happen to show with the diagram in this case, students, ये सोचो कि ये जो block है, I'll consider is initially at main position. यानी तीनों केस में स्टूडेंट्स ये केस 1 है, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस. यहाँ पे ब्लॉक तुम्हारा एग्जैक्टली एट मेन पोजीशन पे मैंने रखा हुआ है. ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पे एक होल्डर है. आई एम होल्डिंग इट विद माय इंडेक्स फिंगर एंड थंब, उसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है. नाउ इफ इन केस इफ आई हैपन टू कंसीडर दिस पार्ट ऑफ इट, then I can consider this as my one of the extreme. This is another extreme I'll consider. यानी अगर मैं ब्लॉक को यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये मैं इसको मैं ले सकता हूँ स्टूडेंट्स एज वन ऑफ माय एक्सट्रीम. तो ये होगा मेरा x इज इक्वल टू प्लस a. देखिए मेरा मेन पोजीशन, ये x इज इक्वल टू 0 है ना स्टूडेंट्स. तो ये क्या हो जाएगा सर, ये होगा मेरा डिस्टेंस a, एम्पलीट्यूड. इस तरफ अगर ब्लॉक आता है, कहाँ से देखना, थर्ड पोजीशन में मैंने ब्लॉक को इस तरफ ले लिया, ये है उसका सेंटर ऑफ मास.
Agreed? So now can I say this will be what? At what distance I'll consider? X is equal to minus a I'll consider. And at this position I'll consider will be x is equal to 0. ये हुआ तुम्हारा amplitude. Friends, क्या ये डायग्राम क्लियर है सबको? सर नहीं समझा ये डायग्राम. Please students, I'm speaking about what? A spring oscillator. Friends, this is actually I'm speaking about a spring oscillator. क्यों नहीं समझ रहा है मालूम है तुम्हें? क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्प्रिंग को कनेक्ट किया. Sir, though in the second case we have stretched the string, right? Now you understand? See? Okay, yes, sir. अभी समझ में आया students? Yes, sir. Okay. अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा मेन पोजीशन है सेकंड केस में. यानी व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम स्टूडेंट्स. तो उसके लिए मैं एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली जा रहा हूं स्टूडेंट्स. प्लीज मैंने क्या किया? आई हैव टेकन अ ब्लॉक स्टूडेंट्स. आई हैव टेकन अ ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज मेड टू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. स्टूडेंट्स, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है. ओके, आई एम मेकिंग इट टू मूव ऑन अ frictionless horizontal surface. Students, is that clear? Initially the block is at mean position. Okay, this is positive extreme, this is negative extreme. Now when I try to hold this particular answer, so when I'm trying to, and it is connected, the block is connected to the rigid support by an elastic spring. Students, this spring is made up of suitable material. Students, अगर suppose मैं ये block को पकड़ता हूँ, मैं खींच रहा हूँ पीछे की तरफ. So students, where is my applied force moving? Where is my applied force? You will say, sir, your applied force is in this direction. अगर तुम्हारा applied force इस तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनना, तो स्टूडेंट्स तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी तो उस तरफ हो रहा है ना? अप्लाइड फोर्स इस तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ जा रहा है. लेकिन उसी टाइम पे स्टूडेंट्स, डू यू फाइंड आउट देयर इज सम फोर्स क्रिएटेड विद इन द स्प्रिंग आल्सो, which will try to make the block to restore its position back. जैसे जैसे तुम स्प्रिंग ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचते जाओगे, उसी टाइम पे और एक फोर्स तुम्हें फील होगा कि वो फोर्स ब्लॉक को अपने जगह पे लेके जाना चाहता है. वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स रिस्टोरिंग. यानी ये जो एफ ए मैंने लिखा है, ये कौन सा फोर्स है? सर ये तो अप्लाइड फोर्स है. ये अप्लाइड फोर्स. यानी स्टूडेंट्स, जैसे जैसे तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, जैसे जैसे तुम्हारा अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा अप्लाइड फोर्स बढ़ता रहेगा, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा. यानी कैसे डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? हाँ या ना? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट किसका? ब्लॉक का. कहां से? मीन पोजीशन से. अगर जितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसी टाइम पे कौन सा फोर्स है? फोर्स रिस्टोरिंग में तो है ना. तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ रहा है. फ्रेंड, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा. देखो सीधा प्रोपोर्शनलिटी. As applied force goes on increasing, your displacement also will go on increasing. At the same time, your restoring force also will go on increasing. But students, how exactly the direction of restoring force? Students, look at the direction of restoring force. Restoring force का direction और displacement का direction क्या same direction में या opposite direction में? बताओ. Opposite. तो क्या ये नेगेटिव में लिखूंगा मैं? ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? That restoring force and displacement are in opposite direction. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. जब भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स, जब भी डिस्प्लेसमेंट रीचेस टू मैक्सिमम, दैट मींस व्हेन x रीचेस टू मैक्सिमम, दैट मींस व्हाट? व्हेन x रीचेस टू प्लस a या माइनस a, दोनों तरफ है, तो उस टाइम पे तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम होगा. लेकिन स्टूडेंट्स, योर नेगेटिव साइन स्टिल विल एग्जिस्ट. When I remove the symbol of proportionality, what am I going to get? I'm going to get a constant in that case. So if x reaches to maximum, students, listen carefully. If x reaches to maximum, restoring force also will reach to maximum. But are they both in the same direction? No, both of them will be in opposite direction. अभी देखो ध्यान से सुनना.
तुमने ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, तुमने ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचा, स्प्रिंग का शेप चेंज हुआ स्टूडेंट्स, द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग हैज चेंज्ड. नाउ विल यू ट्राई टू टेक द ब्लॉक बियॉन्ड द सूटेबल डिस्टेंस स्टिल फर्दर? तुम बोलोगे सर मुझे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, तुमने और पीछे खींचना शुरू कर दिया, तो होगा क्या? होगा क्या सर? अगर आपने ब्लॉक को और पीछे खींचना शुरू किया तो सर या तो स्प्रिंग टूट जाएगी या स्प्रिंग अपना शेप चेंज कर देगा. क्या ये समझ में आया? Yes, sir. यानी आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्लास्टिसिटी, आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डक्टिलिटी ऑफ द स्प्रिंग? Sir, we don't want to understand plasticity. We are not over here to understand change in shape of the spring. We are not over here to understand when does the spring breaks. Sir, we want to understand SHM, simple harmonic motion. So students, I can't take the block beyond a certain distance. That is why SHM is always between two finite points. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. SHM हमेशा दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में ही होगा. अगर तुमने इसके बियॉन्ड और थोड़ा सा तुमने ब्लॉक को पीछे खींच लिया तो क्या होगा? तो स्प्रिंग अपना नेचर लूज कर देगा, वो इलास्टिक से क्या बन जाएगा? प्लास्टिक. प्लास्टिक का मतलब क्या? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया. हम लोग ने बताया ना, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो यही कंसेप्ट मैंने आगे व्हाट यू कॉल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बताया था. स्टूडेंट्स यही कंसेप्ट ध्यान से सुनना. अगर मैंने तुम्हें लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पूछा था स्टूडेंट्स, इज स्ट्रेस proportional to strain, क्या ये सही है? या strain should be proportional to stress? बताओ, कुछ पता है, याद है? Sir, it's correct. Stress proportional to strain. लेकिन actually अगर देखा जाए तो stress का मतलब क्या है? Force acting per unit area. Due to stress the wire undergoes strain ना? Due to stress the wire undergoes strains. So strain should be proportional to stress. हमने ये कैसे समझा था? ये तरीका ऐसे समझा था. स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था? जब भी वायर को तुम लोड करोगे, ध्यान से सुनना, ये यहाँ पर कनेक्ट होता है. जैसे तुम वायर को लोड करना शुरू करोगे स्टूडेंट्स, यानी तुम्हारा अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा. जैसे जैसे तुम्हारा अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा क्या होगा? वायर विल अंडरगो एन इलोंगेशन. तो देखो एक्सटेंशन बढ़ रहा है, लेकिन उसी टाइम पे स्टूडेंट्स, उसी टाइम पे और एक फोर्स है which is trying to restore the wire back to its original position. What is that we call? Restoring force. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, यानी अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ता है, प्लीज वायर के बारे में बात कर रहा हूं, इसको भूल जाओ अभी. एवरीबॉडी प्लीज फॉरगेट दिस पार्ट. हम जा रहे हैं वापस पहले यंग्स मॉडुलस का कंसेप्ट लेते हुए. स्टूडेंट्स अगर मेरा अप्लाइड फोर्स यहाँ पे बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो सर यहाँ पे मेरा इलोंगेशन भी बढ़ेगा. अगर मेरा इलोंगेशन बढ़ा तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा. What is restoring force per unit area? What is applied force per unit area? What is elongation upon original length? ये क्या आ गया? Stress. ये क्या बन गया? Strain. Is stress proportional to strain? क्योंकि स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या था स्टूडेंट्स? स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? इस स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया और रिस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया. क्या है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस? रिस्टोरिंग फोर्स. और ये मैंने बताया था, जैसे जैसे तुम चैप्टर के आगे जाते रहोगे तुम ये डेफिनेशन भी भूल जाओगे, क्योंकि जब भी तुम फॉर्मूला यूज करोगे, जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हमेशा अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स ही दिमाग में आता है स्टूडेंट्स का. तो जब भी तुम 10 स्टूडेंट्स में से किसी को भी पूछोगे डिफाइन स्ट्रेस, तो सारे बोलेंगे अप्लाइड फोर्स पे यूनिट एरिया. लेकिन कोई एक या दो होंगे जो बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया. स्टूडेंट्स ये क्या बन गया तुम्हारा स्ट्रेस, ये क्या बन गया तुम्हारा स्ट्रेन. देयरफॉर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. और इसको समझने के लिए आई हैव टेकन दिस एज ए पार्ट ऑफ इट. वही चीज यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे इसको खींचा, एक हद तक खींचूंगा, इसके बियॉन्ड में जा नहीं सकता, इसके बियॉन्ड चला गया तो बाहर टूट जाएगा या तो शेप चेंज होगा. और वो भी हमने 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 ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया था. स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में कंसीडर ड्यू टू elongation of wire due to external force. Students, is this much clear to all of you all? Now students, is it clear? Yes, sir. Yes. Okay, now listen carefully. Now let us go back to SHM. So what exactly I was trying to say, students?
मैं यहाँ पे मैंने उसको पुल किया, I'm pulling it, लेकिन मैंने उसको एक हद तक पुल किया, उसके बियॉन्ड मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया। जैसे मैंने अपना इंडेक्स फिंगर और थंब छोड़ दिया तो देखो ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। ये किसके लिए वजह से है? व्हाट इज द रीजन फॉर द ब्लॉक टू मूव बैक टू द मीन? तुम बोलोगे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ब्लॉक अपने मीन पोजीशन पे आएगा, लेकिन विल द ब्लॉक विल टेंड टू मूव फर्दर अहेड? यस, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे वो आगे की तरफ जाएगा, सी द स्प्रिंग इज अंडरगोइंग अ कंप्रेशन। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हो रहा है इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग, यहाँ पे हो रहा है इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग एक्शन। What exactly it's trying to store? It's trying to store elastic potential energy. यहाँ पे क्या हो रहा है? Compression in the spring. Compression in spring. ये भी क्या है? सर ये भी है elastic potential energy. ये भी है elastic potential energy. Students, अगर तुमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप के होते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, तुम लोग ने शायद 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में 10 दफे ये क्वेश्चन आंसर रीड किया होगा। अगर किसी ने पूछा होगा डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बोलते आए तुम? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन और शेप। अकाउंट ऑफ पोजीशन और शेप। पोजीशन का मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो गया स्टूडेंट्स। शेप का मतलब ये हुआ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। A stretch spring, what kind of energy it is? Elastic potential energy. A compressed spring will have elastic potential energy. A stretched bow of an arrow, elastic potential energy. A caterpillar, when stretched, elastic potential energy. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो देखो यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर है, यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर है। अभी ये एनर्जी सफिशिएंट है इस ब्लॉक को वापस अपनी जगह पे लेके आना। तो देखो ध्यान से सुनना, जैसे ब्लॉक इस तरफ जा रहा था तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? सर यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा। जब भी ब्लॉक ये एक्सट्रीम पे आ रहा था तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ जाए। यानी दोनों केस में स्टूडेंट्स, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स? फ्रेंड्स, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स? डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज 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 टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये हमेशा ध्यान रखना। दैट इज व्हाई वी से दैट रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to the displacement of the body. It's always directed towards which position? Towards mean or equilibrium position. क्या ये clear हुआ students? Is this clear with all of you all? Yes, sir. ये तुम्हारा concept हुआ decision. यहाँ से अभी तुम्हें एक mathematical relation मिल गया। ये तुम्हारा क्या है? प्लस है, ये तुम्हारा माइनस है, ये तुम्हारा जीरो। अगर स्टूडेंट्स किसी ने पूछा व्हाट एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। आंसर सुना स्टूडेंट्स, लिसन टू द डेफिनेशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज पाथ लेंथ, स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ हमेशा क्या होगा? ट्वाइस एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स एट टाइम्स एमसीक्यूज देते हैं, वो क्या देते मालूम है? an object is oscillating about a mean position having path length 16 centimeter. तो अगर path length 16 centimeter दिया तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? 8 centimeter. path length का मतलब क्या स्टूडेंट्स? डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स अगर 16 सेंटीमीटर हुआ तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर हुआ। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? Yes, sir. एक ऑसिलेशन के टाइम पे, एक ऑसिलेशन के लिए कितना पाथ कवर करेगा? तो 4 times 8, 8 4 32 सेंटीमीटर। ये देखो ना, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे जाएगा, वापस 8 सेंटीमीटर इधर आएगा, वापस 8 सेंटीमीटर इधर आएगा, वापस 8 सेंटीमीटर इधर आएगा। तो कितना होगा? 8 4 32 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या स्टूडेंट्स? एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ना, पार्टिकल मीन से शुरू करेगा, एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, वापस दूसरे एक्सट्रीम की तरफ आएगा, वापस मीन पे आएगा। ये है एक ऑसिलेशन। लेकिन एक ऑसिलेशन उसको भी बोल सकते हैं, अगर तुम एक्सट्रीम से शुरू करो स्टूडेंट्स, दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाओ, वापस इस एक्सट्रीम पे आओ स्टूडेंट्स, ये भी एक ऑसिलेशन। समझ में आया? इसको भी हम एक ऑसिलेशन बोल सकते हैं।
या तुम यहां से शुरू करो, इस तरफ चले जाओ और फिर वापस होते हुए इस तरफ आ जाओ, ये भी स्टूडेंट्स एक ऑसिलेशन है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, एक ऑसिलेशन का मतलब? यस सर। स्टूडेंट्स वन ऑसिलेशन अगर कभी भी किसी ने पूछा तो उसका मतलब क्या स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये बहुत सारे टर्म्स में दे रहा हूं। अगर किसी ने पूछा वन ऑसिलेशन का मतलब स्टूडेंट्स इज इक्वल टू वन साइकिल, is equal to one ripple, is equal to one wave, is equal to one crest and one trough, is equal to one compression, one rarefaction, is equal to one revolution, is equal to one rotation. This is all one and the same. फर्क क्या है, फर्क क्या है, कहाँ पे मैंने ऑसिलेशन को डाल दिया, कहाँ पे मैंने पीरियड को डाल दिया। अगर सपोज मैं रेवोल्यूशन लेता हूँ, रोटेशन लेता हूँ, चलो रेवोल्यूशन रोटेशन, कैन आई से मोशन इज पीरियोडिक, motion is periodic, I can call that as one wave, I can call this as one wave, time taken is constant. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है, वन साइकिल, which is also one revolution, which is also one rotation, which is also equal to one wave, which is also equal to one ripple, which is also equal to one crest, one trough. One crest, one trough together is called as a wave. One compression, one rarefaction. ये किसके लिए जा रहा है crest and trough? Transverse wave के लिए, transverse wave के लिए. Compressions and rarefactions, earthworm का motion, longitudinal waves के लिए. क्या ये पार्ट पूरा क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू? यस सर। Students, all the students, can I erase this? Students, can I erase it? No, sir, 1 minute. Students, are you getting it? Hitanshu, are you getting it? Hitanshu, Josh, Yes, sir. Kunj, what about you, Kunj? Kunj, are you there? Almost said yes. Rishi, what about you? Kunj and Rishi? Rishi, are you there? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Okay. Ruksar? यस सर। Okay, fine.
Can I erase now? Sir, Yes. sir, in module, sir, it's written for SHM that F is directly proportional to X, or where F equal minus omega square X. Sir, I didn't understand that. I'm coming to it, my dear. Did I solve further? I'm waiting for you. The time when you say I'll erase it, फिर इसको मैं लूंगा मैं कहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ मैंने Yes, सिर्फ proportional symbol ही डाला मैंने तू बोलेगा तो मैं इसको जगह कहाँ है where should I write down? yes, I've sir. just proportionality, my dear. मैंने कहा equal to डाला है. Did I put an equal to sign over here? No, sir. And that's what. And you are speaking about equality. है ना? Yes, sir. Yes, done. Yes, sir. Okay. Waiting. Y'all will use it. Students, listen carefully. You got a restoring force is proportional to displacement and it always directed towards a mean position. So now, if in case if I happen to ask you, define linear simple, define simple harmonic motion. We consider. So students, linear simple harmonic motion is the motion of a particle about its mean position, such that the restoring force is directly proportional to displacement and takes place towards and directly towards the mean position. Students, ये है इसका एक statement. Am I getting it? Restoring force is direct proportional to displacement and it's always directed towards mean or equilibrium position. Students. Now, when I remove this symbol of proportionality, I'm going to get a constant that is minus k into x. Your negative sign shows that f and r. Negative sign shows f and x are in opposite direction. What does k over here stands for? K over here stands for, students, force constant, or I can say elastic constant.
or just now I gave you for a spring, so I call it a spring constant. See, there are three different names I'm giving it to you, students. What is this K? Is a constant of proportionality, students, where simply K depends on to what? It depends on to the nature and material. In this case, for a spring, nature and material of the spring we consider. तो स्टूडेंट्स के है क्या? या तो तुम इसको फोर्स कांस्टेंट बोलो, या तो इसको तुम इलास्टिक कांस्टेंट बोलो, या तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो. So students, your restoring force is directly proportional to displacement and directed towards mean or equilibrium position. Negative sign shows that restoring force and displacement are both are in opposite direction. K क्या है? Force constant या elastic constant या spring constant है students. Agreed. Now when I try to go for the formula for spring constant, what exactly K? तो K क्या होगा सर? Restoring force per unit displacement we consider. तो इसका यूनिट क्या होगा सर? इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर इनवर्स. That's the unit of spring constant we consider force constant. क्या इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स सबसे पहले? और K का मतलब हाँ स्टूडेंट्स, क्या इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Now students आंसर सुनो. Now suppose if I ask you state differential equation. Suppose अगर किसी ने पूछा what is differential equation of linear SHM. यानी देखो अभी मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. यानी जब तुम SHM के बारे में पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, तो वो दो टाइप के होंगे स्टूडेंट्स. एक होगा लीनियर और एक होगा एंगुलर. ये भी ध्यान में रखना. हमने जब एग्जाम्पल लिया था स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, जब हम लोग ने सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया था, सिंपल पेंडुलम का, तो स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम में बॉब कैसे मूव हो रहा था? लीनियर. इसको हम बोलते हैं लीनियर एसएचएम. ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स. लेकिन जब मैंने कंपास नीडल के बारे में बोला था जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा था अबाउट इट्स मीन पोजीशन. स्टूडेंट्स ये होगा तुम्हारा एंगुलर एसएचएम. अभी मैं ये दोनों के बीच में फर्क क्यों दिखा रहा हूँ? प्लीज स्टूडेंट ध्यान से सुनना. मैंने उसको लीनियर क्यों बोला? क्योंकि मैंने वेरिएबल एक्स डाला ना स्टूडेंट्स. देखो ना, मैंने एक्स डाला है. और ये कौन सा फोर्स है? ये लीनियर फोर्स के बारे में, लीनियर मोशन के बारे में, ट्रांसलेशनल फोर्स के बारे में, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में. स्टूडेंट्स अगर मैं नीडल के बारे में बात करूंगा तो क्या मैं यहाँ पे एफ लिखता या टॉर्क लिखता? मैं एफ लिखता, यहाँ पे टॉर्क लिखता, बताओ. हाँ स्टूडेंट्स, एंगुलर एसएचएम होता तो क्या मैं लीनियर फोर्स लिखता या टॉर्क लिखता? टेल मी फास्ट. सर टॉर्क लिखते हैं. एंगुलर एंगुलर में टॉर्क आता. यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या आता? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता कि नहीं आता? यस सर. यहाँ पे सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे भी सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी आता. सिर्फ ये है कि टॉर्क एंड थीटा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो स्टूडेंट्स जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो सीधा सीधा सिर्फ ये याद रखना कि ये लीनियर एसएचएम के लिए, क्योंकि वेरिएबल एक्स आया. सो अगर सपोज किसी ने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम या स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, तो कैसे जाओगे आगे? कैसे करोगे? ध्यान से सुना स्टूडेंट्स. तुम्हारे हाथ में कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है. स्टूडेंट्स रिस्टोरिंग फोर्स देखो, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव k into x. स्टूडेंट्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. किसका मास? किसका मास? मेरा या वो ब्लॉक का? सर ब्लॉक का मास. मास ऑसिलेट करता है ना. ये कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर एक्सेलरेशन है, which is restoring, that is equal to negative k into x. Students, what is restoring acceleration? Students is equal to m into x. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स. acceleration is equal to minus k by m. What is k? A constant. What is m? A constant. What is k by m? A constant. What is k? Force constant, elastic constant, spring constant. What is m? Mass of the block, which is a constant. Ratio k by m, a constant. So can I say your acceleration restoring is also directly proportional to linear displacement and always directed towards the mean position? Oh, यानी सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट तुम्हारा आइडेंटिकल है. यस.
तभी जाके जब भी तुम बुक्स के अंदर देखोगे स्टूडेंट्स, तो लीनियर एसएचएम का ये भी स्टेटमेंट दिया होगा. Some books have given in this manner also. Linear, ध्यान से सुना students. Linear, simple, harmonic motion of a body is defined as restoring acceleration is directly proportional to the displacement of the particle or the body, and it's always directed towards the mean position. Yeah, restoring force is proportional to displacement and directed towards the mean position. अगर सपोज मैं ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकाल देता हूँ तो मेरा कांस्टेंट क्या आता है, k/n. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने क्या चाहिए था सर, मुझे तो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए. क्या चाहिए मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए. किसका चाहिए, लीनियर एक्सएचएम. स्टूडेंट्स यू ऑल नो व्हाट एग्जैक्टली x स्टैंड्स फॉर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना स्टूडेंट्स. व्हाट एग्जैक्टली, ध्यान से सुनना. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोलोगे उसको, वेलोसिटी. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन. तो कैन आई राइट ऑन माय एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एज d²x बाय dt स्क्वायर. इसको इस तरफ लूंगा, प्लस k/n into x is equal to 0, which can be written as d²x by dt square plus omega square into x is equal to 0. And so this becomes your equation, differential equation of linear SH, where omega square can be written in terms of k/n. Is this clear, students? Sir, I didn't understand that last part. Did you get this? That d² x by dt square plus k/n into x is No, equal to sir, I 0? didn't get that part only. Why? This is k/n को मैंने इस तरफ ले लिया, क्या किया हमने, माइनस को यहाँ पे ले लिया तो प्लस हो गया ना, इज इक्वल टू 0 डाल दिया, खत्म हो गया. वही k/n को मैंने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर इनटू x, जस्ट सब्स्टिट्यूटेड दैट. यानी व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स, k/n. So how did we get that? That I'll tell you. That I'll tell you. That I'll tell you. I'll tell you later on about it. Projection of particle along the diameter. वहाँ पे आएगा तुम्हारा ये concept. लेकिन for the time being, students, you have to remember omega square is equal to k/n. ये बहुत ही easy है students concept. ये बताऊंगा मैं तुम्हें. स्टूडेंट्स, जब भी तुम्हें अगर किसी ने पूछा स्टेट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन बोलो, तो तुम क्या बोलोगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टूडेंट्स इज दैट पीरियोडिक ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन such that restoring force is directly proportional to displacement and directed towards the mean position. Yeah, linear simple harmonic motion is that periodic oscillating motion of a particle such that the acceleration restoring is directly proportional to displacement and takes place and it's always directed towards mean position. अगर किसी ने पूछा what is the differential equation of linear SHM, तो क्या बोलोगे, d² x by dt square plus k/m into x is equal to 0, या d² x by dt square plus omega square into x is equal to 0. ओमेगा है क्या, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m. ये अभी मैंने इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे व्हाट इज k/m, अ कांस्टेंट, तो ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट. Students, is this clear to all of you all? This is entirely with respect to linear SHM. Entirely with respect to linear SHM. Students, is it clear, all of you all? अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes, sir. Okay. Shall I erase it? No, sir. No, sir. Okay. 1 minute, sir.
Sir, could you repeat the definition of linear SHM once more? Okay, put it down. Put it down, please. Linear simple harmonic motion. Linear simple harmonic motion is that periodic. Is that periodic? Is that periodic motion of a particle or a motion of a body? Is that periodic motion of a body about its mean position? About its mean position, such that the restoring force within bracket write down or restoring acceleration, the restoring force within bracket write down or restoring acceleration, close the bracket, such that the restoring force is directly proportional to linear displacement of the particle, directly proportional to linear displacement of the particle. It's directly proportional to the linear displacement of the particle and is always directed towards the mean position. And is always directed towards the mean position. Agreed? Below it, just write down differential equation. Differential equation of linear system d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. ये है तुम्हारा differential equation of linear system, students. D square x by dt square plus omega square x is equal to 0. Students, d square x by dt square क्या हो जाएगा? Acceleration. What is omega? Students, what is omega? Tell me. Kunj, what is omega? Angular velocity. Angular velocity. Where have you learned about? Where exactly you have learned this? Circular motion. Circular and rotational. Students, वहाँ पे circular rotation में angular velocity हो जाएगा, यहाँ पे angular frequency हो जाएगा. Are you getting it? Students, is this clear? We can call it as angular velocity, but actually I can also consider as angular frequency. वो है circular motion के लिए या orbital motion के लिए या rotation motion के लिए. ये क्या है? SHM के लिए to and fro motion about its mean position. So students, when somebody asks you what is omega over here in SHM, students, then your answer will be angular frequency. What is the formula for omega? What is the formula for omega? So omega can be written as 2 pi by t या 2 pi f. Students, ये भी लिखना. Omega क्या है? 2 pi by t या 2 pi f. What is the unit? Radian second inverse. Exactly the way you have learned it in circular motion. अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना. एवरीबॉडी बी विथ मी, लिसन केयरफुली. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ओमेगा को तुम d थीटा बाय dt का भी लिखोगे और ओमेगा को 2 पाई बाय t का भी लिखोगे. चलो बताओ, है ना? सर्कुलर मोशन में पढ़ा है ना. ओमेगा को d थीटा बाय dt का भी लिखोगे और 2 पाई बाय t का भी लिखोगे. एनीबॉडी? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऑफ कोर्स ये यूनिफॉर्म है ना? तो हमारा भी ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टाइम पीरियड रिमेंस कांस्टेंट ना. मैंने यही तो बोला. डेफिनेशन क्या दिया है? Linear simple harmonic motion is that periodic motion of a particle about its mean position, such that the restoring force is proportional to displacement and acceleration. The motion is periodic. तभी जाके मैंने ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखा ना. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स?
और ये डी थीटा बाई डी किसके लिए होगा? नॉन यूसीएन के लिए, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये भी नोट में लिख देना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाउ इज इट क्लियर? कुंज अभी क्लियर हुआ ओमेगा का मतलब? कुंज क्लियर हुआ? Can I raise the students now? Students, can I erase it? Yes, sir. Okay. Okay, students, so we learned about your restoring force. I told you about angular velocity, students. Is that clear? Now, why is it so that angular velocity, why do we write an omega as omega square as k by n? Okay, this part I'm going to pick it up in the next lecture. Students, for the time being, kindly revise, go to the previous chapter, properties of matter also. उसके पहले भी तुम fluid mechanics का part करते रहना ध्यान से, और ये chapter को go through it consistently and read this chapter beforehand also. It's a very important chapter, students. अगर ये chapter तुम्हारा सही हो गया ना, तो take it from me, तुम्हारा wave motion भी सही जाएगा, stationary waves भी सही जाएगा, light का electromagnetic waves का wave optics सही जाएगा, interference and diffraction, students. Is this clear? Okay, so we wind up today. Next lecture will be continuing further. Okay, students? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.